this shampoo. Many of you know this shampoo because most of the doctor Hey you guys, what's up? I hope you all are doing well. Hi, my name is Sanju and I know it's been a while that I haven't sit and speak with you guys in a proper way. So since then I have missed you guys so much. Yeah, I am recording this video today and I'm gonna speak a lot. So grab some snacks and tea to watch this video till the end because this video will help you out so much. So I know we all are suffering from hair fall because of this monsoon season, and I hate this season because oh my god, we have to dry our clothes in our room. It feels so yuck, stinky, and I basically don't like this season. Yeah, sometimes I like this season when I have nothing to do, just chilling, and there is raining outside and you are listening a good song and you are having snacks with a hot cup of tea. And in this season we face a major hair issue and हमारी बाल पतली हो जाती है. For you guys I have tips and tricks which will help you guys from less hair fall and less frizziness, because in monsoon it sucks your moisture from here and your hair gets frizzy and I don't like it. Today in this video I haven't straightened my hair. It's my natural hair. Yeah, my hair is not that silky and straight as you can see. This is totally my natural hair, but yeah, I have do some things with my hair, so that's why I get this silky shiny hair. But in monsoon it's very difficult to get this kind of hair texture actually. So yeah, still I have get this. And also I have minimized my hair fall in this monsoon season. So if you are interested to know, then keep on watching. So first thing first is to remove your dandruff from your scalp, and this is the one of the reason of your hair fall, and you have to take care of your scalp. So what can you do for your dandruff? I mean to remove your dandruff. You can use dandruff wala shampoo, but you have to research a lot, or you can visit a dermatologist. They can recommend you a shampoo, so and this will works very well, because कुछ भी शैम्पू यूज़ करने से तो नहीं होता है ना. यू हैव टू रिसर्च फॉर दिस, और यू हैव टू विजिट योर डॉक्टर or dermatologist. They can help you out, or if you are pro, then you can research by yourself and choose a very good shampoo for your dandruff. Yeah, there is few shampoo in our market which really help to remove your dandruff. अगर आपके scalp से dandruff नहीं है, then आपका hair fall बहुत ही कम हो जाएगा, and it's very important to remove your dandruff. Even I have dandruff and it's very irritating. Even I have very flaky skin over here, and basically dandruff is dead skin of your scalp. और आपका skin अगर scalp से remove हो रहा है तो it's obvious ना कि you will face hair fall a lot, isn't it? So moral of the story is you have to work on your dandruff, which is remove your dandruff. So yeah, पहला हो गया कि to remove your dandruff you can use a very good shampoo, or I have few tips and tricks to remove your or to maintain your dandruff. So I have another tips to remove your dandruff. So you can use ginger juice to remove your dandruff. What you need to do, you just take a ginger, grind it in your mixer, or you can use I don't know what it's called in English, which is shil nora. We called it shil nora. So just paste it or grind it in your mixture. It will become a paste. Then squeeze it very well, and you will get a juice. And that juice apply onto your scalp like this. ऐसे ऐसे apply करना जितना होगा. पूरे scalp में ऐसे ऐसे apply करना, और इसको 1 घंटा या 2 घंटा रख सकते हो. उसके बाद आप shampoo कर लेंगे, and it will really help you to remove your dandruff. Also you can use a scalp massager. Yeah, if you don't know about this, then I will put a picture over here so that you can get an idea. So yeah, you can get this from Amazon very easily, and it's very cheap, which is like it's look like this, and you can just rub onto your scalp, and it will easily remove your dandruff, and it will also
your blood circulations, which is very good for your hair, so you will get a healthier hair. Also you can use a good hair mask which is made for dandruff. Like if you have very few dandruff, then you can use those masks. Use this mask by Mama. Mask is very good if you have very less dandruff. Then okay, so how to remove dandruff is step तो हो गया. Now the next step is a shampoo. When we are doing our shampoo, please remove your nails. I mean, you don't need to remove your nails. So when you are doing your shampoo, just don't rub your scalp like this with your nails. Like ऐसे शैम्पू मत करना, बिकॉज इससे क्या होता है, इससे और भी तुम्हारा जो स्किन है यहाँ पे वो और भी लूज़ हो जाता है और कैसे बोले उभल के आ जाता है. मे बी please correct me if you're don't shampoo like this. It will increase your dandruff more, so don't do this. Just ऐसे shampoo कर लेना. It's okay. It will clean your scalp very well and remove your oil. So generally in this season we lose our moisture from our hair. To get this moisture, हम लोग क्या करते हैं, ओवरनाइट हेयर ऑयलिंग. या ओवरनाइट हेयर ऑयलिंग इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, बट इट्स नॉट अ गुड ऑप्शन इन दिस सीजन. या आई डू ओवरनाइट हेयर ऑयलिंग. इट्स वेरी हेल्पफुल टू गेट अ मॉइस्चर एंड शाइनियर हेयर. वन मोर थिंग, अगर आप सोचते कि ओवरनाइट हेयर ऑयलिंग करने से आपके हेयर बहुत हेल्दी होता है, हेयर ऑयलिंग से आपका हेयर ग्रोथ और रीग्रोथ नहीं होता है. हेयर ऑयलिंग इज़ गुड फॉर कंडीशनिंग योर हेयर. सो दैट्स इट. बैक टू द मॉइस्चर. It is like if you want moisture in your hair, then what can you do before doing your shampoo? Just उसके shampoo करने से 2 घंटे पहले just oiling your hair and it's enough. It's enough. You don't need to do overnight hair oiling, because आप अगर overnight hair oiling करते हैं तो इसके वजह से आपका dandruff increase हो जाता है और you will face more hair fall. So shampoo करने से 2 घंटे पहले आप अपना hair oil कर लेना और shampoo कर लेना. It's the best thing. अगर आप सोचते हैं कि हाँ कोई डैंड्रफ वाला शैम्पू यूज़ करते हैं तो इससे क्या होता है, हमारे हेयर बहुत ड्राई हो जाता है ना. मेरा हेयर भी बहुत ड्राई हो जाता है. तो उसके बाद क्या कर सकते हो, अप्लाई अ वेरी गुड कंडीशनर. या आई नो फॉर डैंड्रफ कंडीशनर इज़ नॉट गुड, बट तुम लोग क्या करते हो, कंडीशनर को अपनी स्कैल्प में अप्लाई कर लेते हो. अगर तुम अपनी स्कैल्प पे अप्लाई करोगे तो या इट विल इंक्रीज योर डैंड्रफ. सो डोंट डू दिस. जस्ट अप्लाई योर कंडीशनर फ्रॉम हियर. ओके, जस्ट from here you apply your conditioner and you are good to go. It will not increase your dandruff. So yeah, do this logically and very smartly ना. अपने कंडीशनर अप्लाई कर लिया, अभी आपका धोने का टाइम हो गया है, तो उसके बाद क्या करोगे, वॉश योर हेयर वेरी वेल. या क्योंकि अगर थोड़ा बहुत भी कंडीशनर आपके बाल में या स्कैल्प में रह जाता है तो इट विल इंक्रीज योर डैंड्रफ अगेन. सो डोंट डू दिस. वॉश योर हेयर विथ वाटर वेरी वेल, सो यू विल नॉट फेस डैंड्रफ. कंडीशनर लगाने के बाद भी अगर कुछ काम नहीं होता है, फिर भी आपका बाल बहुत फ्रीजी हो जा रहा है, देन यू कैन यूज़ अ वेरी गुड और केमिकल फ्री हेयर सीरम फॉर योर हेयर. इट विल रियली हेल्प यू टू गेट शाइनी एंड सॉफ्ट हेयर. अभी आप सोचेंगे कि इतना कुछ करेंगे तो हेयर फॉल का क्या होगा. येस, मैंने आपको पहले ही बोल दिया है कि वर्क ऑन योर डैंड्रफ. आपने अगर कुछ अच्छा शैम्पू कर लिया या फिर कुछ अच्छा मास्क लगा लिया और आपने कुछ डैंड्रफ स्पेशल शैम्पू यूज़ कर लिया, आप अपने स्कैल्प को बहुत अच्छे से मसाज कर लिया विथ स्कैल्प मसाजर, देन या स्कैल्प में और डैंड्रफ ही नहीं है तो यू विल नॉट फेस अ लॉट हेयर फॉल इन दिस सीज़न. बट ऐसा मैं नहीं बोल सकती कि या अगर ये सब आप करेंगे तो 100% हेयर फॉल स्टॉप हो जाएगा. इट्स वेरी नॉर्मल कि डेली आपका 50 से 100 हेयर फॉल होता ही है. सो या इट्स वेरी नेचुरल, बट उससे ज़्यादा अगर होता है और आपका हेयर रीग्रोथ नहीं होता है तो वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. सो मेंटेन ऑल दिस थिंग्स. ऑल्सो यू कैन यूज़ अंडा, आई मीन एग. एग में क्या होता है, केराटिन रहता है एंड केराटिन इज़ अ प्रोटीन ऑफ आवर हेयर. हम लोग क्या करते हैं, सैलून जाते हैं फॉर केराटिन ट्रीटमेंट विच इज़ वेरी हार्मफुल फॉर योर हेयर एंड स्कैल्प. सो डोंट डू दिस. अप्लाई अंडा
it will provide protein which is keratin into your hair. Now I'm going to tell you what I do for my hair step by step. To get soft and shiny hair, I do my hair oiling shampoo करने से 2 घंटा पहले. So for hair oiling I use this coconut oil which is extra virgin coconut oil, and it's very healthy for your scalp. Always purchase a good hair oil and always go for extra virgin coconut oil. And if you are interested to purchase this hair oil, then I will mention all the product links in my description box below, so don't forget to check them out. मेरा 2 घंटा जब हो जाता है तो मैं शैम्पू करने के लिए मैं चले जाती हूँ. पहले मैं क्या करती हूँ, और शैम्पू यूज़ करती हूँ which is specially made for your dandruff. Yeah, I use a medicated dandruff shampoo which is this shampoo. Many of you know this shampoo because most of the doctors recommend this, but I'm not using this shampoo by recommending any dermatologist because I know this shampoo is very good for your scalp, but I will suggest you to visit a doctor and ask your doctor that you can use this shampoo or not, then buy this and then use this shampoo. And I am using this shampoo and I am very happy with the result. तो इस शैम्पू यूज़ करने के बाद क्या होता है ना, मेरा क्या बोलते हैं, तो इस शैम्पू में सिर्फ अपनी स्कैल्प में मसाज करती हूँ, तो पूरे बाल पे मैं यूज़ नहीं करती हूँ. तो पूरे ऑल ओवर शैम्पू करने के लिए आई यूज़ दिस शैम्पू बाय हर्बल एसेंस. Okay, so it's a clean white strawberry sweet mint shampoo. And this shampoo is very good for your scalp cleaning. Yes, scalp cleaning is very important. Remove your oil from your scalp. अगर आपके scalp में oil और pollution रह जाता है तो it will again increase your dandruff. So again you know, अगर dandruff ज़्यादा हो जाता है तो hair fall भी होता है. So yeah, I use this shampoo for scalp cleaning. And इसके बाद भी क्या होता है, मेरा hair texture बहुत dry हो जाता है which I don't like. मेरा hair वैसे भी dry है बचपन से, लेकिन I want my hair very soft and shiny. So after that I use this Mamaearth onion conditioner. This shampoo is amazing. Sorry, this conditioner is amazing. Conditioner is very good to make your hair soft. I really like this conditioner. It's like game changer. I will recommend you if you haven't faced any problem from Mamaearth का shampoo and conditioner, then go for this conditioner. कंडीशनर अप्लाई करने के बाद करती हूँ अपने इस वेट हेयर में आई अप्लाई अ गुड हेयर सीरम. दिस इज लाइक 6th or 5th bottle, I guess. I don't know, I can't remember. This hair serum is by Khadi Natural. This serum is so good because also it has no chemical, no harmful chemical. So yeah, it's a very good options for your hair. Really make your hair very soft and shiny. ये सब हो जाने के बाद अगर मैं अपना हेयर को एयर ड्राई करती हूँ और थोड़ा बहुत ड्राई होने के बाद मैं कोम करती हूँ. एंड फॉर कोम्बिंग आई यूज़ दिस वुडन का comb, and this comb is made with neem and chandan ka wood, and it's very healthy for your scalp. Yes, don't use plastic का जो comb होता है, don't use them because it's not good. Sometimes this comb will increase your hair fall. So yeah, अभी आपके पास टाइम है, please throw all your plastic का comb and grab this one. And I am using this since 3 years now. और अभी मैं आपको दिखाऊंगी मैं अपना खुद का हेयर टेक्सचर. या रिसेंटली मैंने अपना हेयर कट भी किया है, अपने घर में किया है, मेरे बहन ने कर दिया था. ऑल सैलून्स आर क्लोज नाउ, एंड अगर ओपन भी हो जाता है तो मैं नहीं जाऊंगी बिकॉज मेरे से तो नहीं होगा. ओके, सो या दिस इज़ माई एक्चुअल हेयर टेक्सचर. नो, this is not my actual hair texture because since childhood my hair is very frizzy and rough. But yeah, as you can see, I have maintained all these things like conditioner, a good shampoo, a good dandruff shampoo, hair oiling, hair serum. That's why I get this hair texture. And yeah, this is like मैंने थोड़ा सा भी स्ट्रेट नहीं किया है. दिस इज
my actual hair texture. And in this monsoon I have maintained all these things, especially I worked on dandruff. That's why I have minimized my hair fall, and I am very happy with my result. And yeah, you can see this actual hair. I really love this texture and I am very happy. So yeah, this is it for today's video. I hope you love this video. Also I have more hair care and skincare hacks, so if you guys are interested, then comment down in my comment section below, then I will definitely make those videos for you guys. So I will see you in my next video. Till then, stay safe, stay happy, bye.